if you ever made some kind of coded some kind of APIs and wondered कि यार why my application takes so much time, like entire APIs, like code जो आपने बहुत fast लिखा है कि आपके कोड में ज्यादा कुछ कर नहीं रहा, literally it's like making a request, getting the data users from the database, and it is sending to the user. That's all you are doing. So no complicated things going on, but still you takes some time. See, in this video I will give you the answer of that and how to optimize your APIs and basically overview of that entire like system of API development. Okay, so let's start with this. So I have written this very basic code here, which does nothing but a get request, and just do this DB get the DBs from sorry data from the DB and return it to the user. Just a sample code so that you understand what I'm saying. So let me just make it little bit bigger and here. सो जब पहली बार अपन कोड लिखते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू डू इज यू थिंक कि आपके कोड में कोई प्रॉब्लम हो, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका कोड अच्छा हो, ये फलाना टाइम का. बट रियलिटी इज द फ्रेमवर्क दैट यू आर मोस्ट प्रोबेबली वट एवर द फ्रेमवर्क यू आर यूजिंग, देर आर ऑलरेडी वेरी स्मार्ट इंजीनियर्स जिन्होंने कोड वगैरह लिख रखा है, फ्रेमवर्क बनाए हैं, तो उन्होंने इन सब चीज़ों का ऑलरेडी ध्यान रखा है कि तो आपको उसमें कुछ ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और रेयरली ऐसा होता है कि आपके कोड में कुछ ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हो. सो where does the problem exist? So instead of thinking in just one term, think of in entire system कि बैकएंड सिस्टम की क्या होता है. जब आप रिक्वेस्ट मारते हो तो थिंक ऑफ इट लाइक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कि आपका रेस्टोरेंट के बारे में सोचो कि आप ऑर्डर प्लेस करते हो, वहाँ पे ऑर्डर रिसीव होता है, देन वो किचन में प्रिपेयर करते हैं आपको ऑर्डर को, देन ट्रैफिक, देन डिलीवरी बॉय आपके ऑर्डर को देके जाता है, दिस थिंग गोस. तो ये पूरी एक प्रोसेस है. सेम तरीके से आपका रिक्वेस्ट और अपना जो एप्लीकेशन है उस तरह काम करता है कि यूजर सेंड द रिक्वेस्ट तो वो इंटरनेट के थ्रू जाती है, एंड तो ऑब्वियसली इंटरनेट विल टेक सम टाइम टू रीच टू योर सर्वर, सो वो टाइम लगेगा ही लगेगा. फिर आपका एप्लीकेशन कुछ काम करता है, तो लेट्स जस्ट सो हियर इज द फॉर्मूला दैट, एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ लाइक फॉर्मूला जो कि यूज होता है जस्ट एग्जांपल के लिए कि एक्स अमाउंट ऑफ टाइम इंटरनेट लेता है फ्रॉम यूजर्स. जैसे मैं मान लो यहाँ बैठा हूँ और मैंने कुछ अपलोड करा, कुछ भी लाइक करा, कुछ भी करा, तो ये जानने में टाइम लेता है. सर्वर पे जाएगा आप, तो सर्वर तक जाने में इसको टाइम लगेगा, तो एक्स अमाउंट ऑफ टाइम मान लेते हैं. देन वाई अमाउंट ऑफ टाइम आपका एप्लीकेशन जो आपकी एपीआई वगैरह जो कर रही है, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ कैलकुलेशन वगैरह वट एवर दैट इज डूइंग योर एप्लीकेशन, वाई अमाउंट ऑफ टाइम ले लेते हैं. रेयरली ऐसा होता है कि ये बहुत स्लो होता है, अदरवाइज ये सबसे फास्ट यही चीज होती है आपके एप्लीकेशन में, आपका कोड बहुत बहुत फास्ट होता है लिटरली. एंड देन जेड टाइम लगता है सिर्फ आपके डीबी डाटाबेस से रिलेटेड कुछ काम करने में, लाइक मे बी यू रोट सम क्वेरीज, तो डाटाबेस में जाना, क्योंकि डाटाबेस का ऑपरेशन इट्स नॉट an easy thing. You need to understand that point of view. From that point of view, database operations are not easy. It's not constant time. It takes literally time because डिस्क रेड करना, देन फिर लॉकिंग का ध्यान रखना, इफ देयर आर इंडेक्सेस और नॉट इंडेक्सेस तो उसका ध्यान रखना, एंड हाउ मेनी टेबल्स लाइक स्कैनिंग करने में बहुत टाइम लगता है. बहुत सारी चीजें गोज बिहाइंड दिस डाटाबेस कोड. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द टाइम ऑफ योर एंटायर एप्लीकेशन. एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ लाइक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इट जस्ट एग्जांपल कि आपके एपीआई के अंदर और भी चीजें होती है जो कंट्रीब्यूट करती है टाइम के अंदर, टाइम को इंक्रीज करने में. ओके, सो लेट्स गोस. एंड सो डोंट थिंक इन दिस टर्म कि एपीआई कोडिंग में, थिंक ऑफ अदर वेज ऑल्सो. एंड नाउ ये तो प्रॉब्लम हो गई कि ओके ये, बट सॉल्यूशन क्या है, लाइक हाउ डू यू मेक योर एपीआई लाइक बेटर. ऑफ कोर्स, सो these are the like this is how you calculate the time, and here are the some problems that exist and how you solve them कि why do your application takes time. So सबसे पहला था too many DB calls. As I said कि database operations are very like expensive, so of course reduce the solution क्या है इसका कि कोशिश ये करो कि आपका ऑपरेशन लाइक आपका एप्लीकेशन don't do like so many API calls, so not so many API calls but so many querying to the database. Try to make sure कि you write queries in a way where 5 क्वेरी की जगह एक क्वेरी में आपका काम हो जाए. एंड ऑफ कोर्स पुट इंडेक्सिंग इफ यू कैन, बिकॉज अदरवाइज थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे डाटाबेस के बारे में तो आपको पता लगेगा कि हाउ डाटाबेस ऑपरेशंस आर एक्सपेंसिव. लाइक व्हेन वी राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग or select something from this where id is equal to that, so it's not like it just goes and pick one thing. It literally scans entire data. So if you you can assume if you have millions of data, then it will read each like row and then match the id. So it can take some time. So indexing is a trick, not a trick but the way we store the reference of that particular bucket or row or whatever that is. So indexing के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि how it enhance the application speed. Okay, because database contribute into this entire application speed.
नो कैशिंग, कैशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज आई सेड कि देयर आर टाइम्स व्हेन आपके एप्लीकेशन में सेम काइंड ऑफ रिक्वेस्ट हो रही है, वो जाके ऑपरेशन परफॉर्म होता है, देन डाटा आता है, तो इससे बेटर कि कैशिंग कर लो। तो कैशिंग से वेरी, कैशिंग इज इन मेमोरी होती है, तो इट इज वेरी फास्ट फ्रॉम द डिस्क से रीड करने से बेटर है। स्लो क्वेरीज, एज आई सेड कि क्वेरीज स्लो होती है, कि आपने कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिख दी जो थोड़ी स्लो है, तो मेक श्योर कि आप डाटाबेस में क्वेरी लिख रहे हो उसका थोड़ा ध्यान रखो कि यार हाउ इज इट दिस वर्किंग एंड हाउ मेनी टाइम दैट इज टेकिंग एंड हाउ कैन यू मेक श्योर कि यार कैन यू राइट इन डिफरेंट वे विच विल टेक लेस टाइम। नेटवर्क लेटेंसी ऑफ कोर्स ये होती है चैट एपीआई टू मैनी रिक्वेस्ट, अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट हो रही है मतलब सेम टाइम टू टाइम, तो अगेन बिकॉज आपका जो लाइक एंटायर एप्लीकेशन है या फिर सर्वर है या फिर डेटाबेस है, दे कांट लाइक परफॉर्म मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट लाइक पर सेकंड, दे हैव थ्रूपुट, सो उतनी ही कर पाते हैं, तो बाकी जितने वो सब बाकी रिक्वेस्ट है वो सब वेट कर रही होती है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ यू लाइक रिड्यूस द टाइम ऑफ योर एंटायर applications API, not just one API, because these are very important tricks and things that to consider in a real system, and trust me, they make a tons of difference. So don't just think about code itself कि code मैंने fast नहीं लिख रहा, most of the time code में कुछ problem ही नहीं होती है। Okay, so hopefully you learned something new today, and yeah, in the next video we will like go into something else. Just wanted to say whenever designing API or designing a system, think about this point of view also. These are really important point of view. Have a nice day.